तो सफा अनुश सफा मरवा वो सारे आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो ये वी गोना स्टार्ट विद दिस, ठीक है। ये हम यही पेपर कर रहे थे। कौन सा पेपर था? 0620, ठीक है। वेंट 23 एंड क्वेश्चन पेपर 22। नाउ वी वर एट कौन से वाले पे थे? वी वर एट दिस वन, डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल इथानोएट। तो एवरीथिंग इज गिवन, सो यू जस्ट हैव टू टेल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दैट्स इट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? दैट्स द टोटल नंबर ऑफ atoms in a molecule. So, which one is the correct formula? It is C4. Uh, It's B. C4H8 and H8 है, confirm है, ठीक है। Yeah, it's H8. अच्छा, और ठीक है, इट्स बी। ठीक है, इट इज बी, डेफिनेटली बी। अच्छा, नेक्स्ट वन, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 85% ऑफ कार्बन बाय मास। अब ये क्वेश्चन लंबा है। व्हाट इज द मतलब बेसिक नहीं, इट्स स्टिल नहीं, नॉट दैट लेंथी, ठीक है। इट्स जस्ट शॉर्ट। यू जस्ट हैव टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो हाइड्रोकार्बन में which two elements are present? There's just carbon and hydrogen, right? And he has already told you that it's 85.7% by mass of carbon. So ये 85.7% है। तो बाकी कितना बचा? What is the percentage of H? That's going to be. Can anyone do the math? मतलब what's 100 minus 85.7? क्या आता है? That's you confirm करो, 14.3 है। Yeah, 14.3. अच्छा, मुझे बताओ, how do you find the empirical formula? What's the method of finding the empirical formula? मतलब क्या steps होते हैं once you have the percentages? Once we have the percentages, once we multiply it by the like carbon is 12. We multiply it. No, we divide it by the smallest one, smallest नहीं, percent. दो steps हैं। First thing is you find the moles, ठीक है। This is the percentage mass, right? So moles किस तरह होते हैं? It's mass divided by molar mass, right? The atomic mass, which is 12, ठीक है। और इसके moles क्या होंगे? That's going to be 14.3 divided by the AR of H, which is 1। पहला स्टेप, ठीक है। द फर्स्ट दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज यू डिवाइड बाय AR। तो वो कर दिया, वी डिवाइड बाय 12 एंड वी डिवाइड बाय 1। व्हाट डू यू गेट? 85.7 डिवाइड बाय 12 क्या आता है? मतलब ये वाला तो 14.3 आ रहा है। व्हाट्स द अदर वन? शाम से क्या आ रहा है? It is 7.14. This is 10.14। और फिर once you have this ratio, you have to find the simplest ratio, which is divide by the smallest, ठीक है। So I'm going to divide both of them by 7.14। तो मेरे पास आ जाएगा 1 ratio, I'm going to get 1:2, right? Yes. So it's A, right? ठीक है। So that's how you find empirical formula. Up next one, you have a formula for compound containing element X is Na2H2O3. The relative formula mass of the compound is 158. What is the relative atomic mass of X? अब उससे ना इस सारे का जो फॉर्मूले की mass है ना, is already told you that it's the whole thing is what, 158, right? तो उसके अंदर Yes. we are supposed to find out X. तो we know of Na is क्या है? Na is 23, right? तो 23 times 2। X की नहीं पता, so there are two X's, so I don't know, I'm just going to write 2X. Oxygen is 16, and that's going to be 16 times 3, right? And all of this should add up to be equal to 158. So
ये x को निकालो subject of the equation. So what do you get? You're going to get 158 and you have to subtract everything, take everything to the right. So 23 into 2, that's 46. 16 into 3, that's 48. And that's 2x. अब calculate करो x क्या आ रहा है. It's 32. A. A. ठीक है. As the next one, dilute aqueous sodium chloride, potassium chloride is electrolyzed using platinum electrodes, which identifies the product. ये पूरा electrolysis का है, ठीक है? ठीक है, we're going to do the whole electrolysis. So you've got cathode, you've got anode, or so this is your cathode, that other side is your anode. अब बताओ, potassium chloride, potassium is group 1, K plus 1, ठीक है? And Cl is group 7, so it's minus 1, KCl है. अब बताओ, aqueous potassium chloride. So what ions are going to be present in the solution? इस पूरे solution, what are the ions that are going to be present? Sorry. क्या होगा, कौन कौन से ions होंगे? Like at cathode. Shadeh, would you like to answer that? Okay, which ions are going to get attracted to cathode? Positive ions. ठीक है, so K plus 1, right? Yeah. And H positive. ठीक है, उसमें मैं आता हूँ. And Cl minus 1 goes to the other one, and the solution is aqueous. Aqueous के अंदर there's always Yeah. H plus H plus and then OH minus for the. OH minus 1, ठीक है. फिर वो जो next part है, which is के, अच्छा, the next part, which is who gains electrons. So how do you figure out who gains electrons? मतलब उस पे क्या देखते थे? Is the electron going to go to K plus 1 or is it going to go to H plus 1? Battery sending electron. Uh, K plus. नहीं, Because it's higher in the reactivity series. ठीक है, so you look at the reactancies. So K तो बिल्कुल KNaCAMG, you got Al, Zn, Fe, Sn, क्या है फिर PbH, and then you got Cu and Hg and all of that stuff. ठीक है, it just goes on. So you've got H and you've got K over here. तो जो bottom पे होता है ना, that's the one that gains electrons. ठीक है, so it's going to go to H. H is the one that's going to gain electrons, and so H plus 1 is the one that's going to gain electrons. It's going to become neutral, like it's diatomic, so you have to double everything, TK, because it's going to form an H2 gas molecule, TK. So at cathode, you've got hydrogen gas that is getting formed. Is that clear? Yes. Or anode पे, who's the one that's going to lose electrons? उसके लिए you have another series, which is I minus 1, Br minus 1, OH minus 1, और फिर बाकी ions, ठीक है? Uh, Again, the one that's at the bottom, ठीक है? So right now it's going to be Cl minus 1 की exception होती है, which is that if it's concentrated, then you select Cl minus 1, but not in this case. They didn't say that it was concentrated. The OH minus 1 is the one that's going to give electrons to the battery, ठीक है? क्या equation होती है OH minus 1 की? क्या होती है? It's 4OH minus 1? It's 4OH minus 1 gives us 2E plus yeah, 2H2O plus 4E. Plus O2. Yeah, plus O2. ठीक है, तो oxygen gas gets formed at anode, ठीक है? Clear? Yes.
As a next one, again, you've got another electrolysis that's happening, and as a now he's using copper electrodes, ठीक है? तो और ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस भी करेंगे, ठीक है? So he's doing aqueous copper chloride, ठीक है? Copper 2 chloride. So you got copper ions +2. Chlorine is group 7, so -1. Or aqueous है तो there's going to be H +1 and there's going to be OH -1 from water as well, ठीक है? So these are the four ions that are going to be present in the solution. At the cathode, ये जो negative side है, इधर कौन से ions होंगे? The positive ions are going to get attracted, copper +2, and you've got H +1. और जो positive, the anode, you're going to have Cl -1 and you're going to have OH -1, ठीक है? अच्छा, अब ये कि battery is going to send electrons, so it's either going to go to copper or it's going to go to H +1. तो वो reactivity C's कहाँ पे? We just wrote it down. Copper is like over here and H is over here. तो कौन किसको select करोगे? It's going to be copper, ठीक है? Is this clear? Yes. So between H and copper, it's going to be copper. That's the one that's going to gain electrons. So यहाँ पे if I write the equation, so copper +2 would gain 2 electrons and it will become neutral. It will become copper, ठीक है? And the metallic copper that is formed will deposit on the cathode. So the mass of the cathode will increase. यहाँ पे mass जो है वो it's going to become bigger and bigger. तो negative electrode की जो mass है ना, that will increase. So it's either going to be B or it's going to be D. ठीक है, clear है? Cathode वही है exactly, ठीक है? Is this clear? Yes. अच्छा, अब दूसरी साइड जो है, ठीक है, the other side, always remember कि when you दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं. You either have inert electrodes which are made out of platinum or graphite, or you have active electrodes which are made out of metals, ठीक है? यहाँ पे the electrode is made out of copper metal, ठीक है? और metals की क्या प्रॉपर्टी होती है? They like to lose electrons, ठीक है? तो they really like to lose electrons. तो अच्छा, they like to lose electrons. So what happens is कि जब battery at the anode, when it attracts the electrons, so instead of either of the ions losing electrons, it's the metallic copper, ये जो copper की strip है ना, that is the one that ends up losing electrons. उसी में से battery ना, वो जो copper metal की जो strip है ना, at the anode, the battery pulls the electrons out of it, it turns into an ion, it loses electrons, so the electrode will start to dissolve, ठीक है? क्योंकि battery is going to pull electrons from it. तो ये आंसर कि active electrodes के अंदर the ions at the anode are not the ones that are losing electrons. It's the metallic electrode that is the one that ends up losing electrons to the battery, and it turns into ions and it starts to dissolve, ठीक है? तो उसकी mass क्या होगी? उसकी mass decrease होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? Is that clear? तो एक साइड पे copper ions produce हो रहे होंगे, and on the other side, on one side the copper is losing mass, and on the other side the same copper ions are gaining electrons and they're turning back into copper, ठीक है? तो एक साइड पे copper deposit हो रहा होगा, on the other side copper would be dissolving. Is this clear? Yes. Yes. अच्छा, अब ये कि अच्छा, ये वाला हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है? और एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर ना वो पूछ लेंगे कि what happens to the is there any changes happening to the solution? No, there is nothing happening to the solution because nothing happens to Cl -1, nothing happens to OH -1, nothing happens to H +1. और copper +2 को भी कुछ नहीं होता क्योंकि एक साइड पे copper +2 is getting formed and on the other side the same copper +2 is turning back into copper, so the amount of copper ions it kind of remains unchanged, ठीक है?
तो इसमें याद रखना, इस इलेक्ट्रोलिसिस में द सोल्यूशन डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। वो जो पिछला इलेक्ट्रोलिसिस था ना, द सोल्यूशन डिड अंडरगो, हाँ उसमें भी खैर कोई खास चेंज नहीं थी। चेंज सिर्फ ये थी कि सोल्यूशन में से ना द H plus one is gone and the OH ions are gone। ठीक है। तो the solution would become more concentrated because these two ions were coming from water। तो वाटर कम होना शुरू हो जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। अच्छा खैर, अगले वाले पे चले जाते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ 4 डिफरेंट रिएक्शंस आर मेजर्ड। व्हिच रिएक्शन इज द लीस्ट एक्सोथर्मिक? मुझे पहले बताओ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? Is It increases, right? Whenever you have an exothermic reaction, जिसका कंबशन है, it produces energy, और environment का टेम्परेचर जो है ना, that increases। तो बताओ इनमें से कौन सा, which one is the least exothermic? जैसा बी इज एंडोथर्मिक, राइट? उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सी इज ऑल्सो एंडोथर्मिक, ठीक है, उसमें भी टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दी अदर टू आर एक्सोथर्मिक। उनमें से लीस्ट एक्सोथर्मिक कौन सा? it's A नहीं, A produces a lot of energy। 19 to 25, it increases the temperature by 6 6. degrees। So D. D, it only increases the temperature by 3 centigrade। ठीक है, so D is the answer। अच्छा, अब अगला नेक्स्ट वन, which reaction is an endothermic reaction? अच्छा, इसमें याद रखा कि when you're breaking bonds, अच्छा when you're breaking bonds, ठीक है, breaking bonds जो होता है that's always endo, and when you're forming bonds, ठीक है, that's always exo। a lot of reactions involve both। ठीक है। पहला रिएक्शन बताओ, पहले रिएक्शन में is a bonds being broken or bonds being formed? In the first one, A bond is being formed. नहीं वो broken, ठीक है। जो छोटा टू लिखा होता है उसका मतलब होता है कि the bonds, the elements were together, they were bonded together। ठीक है। Yes. So now they're no longer together, so that means you broke the bond, right? Is Yes. this clear? So if you're, Mm-hmm. so if you're breaking the bond, then it's going to be endo, right? Is that clear? Yes. So Yes. a second reaction, that is combustion। Methane is being burnt in oxygen to produce carbon dioxide and water, so that's a combustion reaction। combustion reactions जितने भी होते हैं, they always produce energy। ठीक है, they always produce heat whenever you burn a hydrocarbon। अच्छा, थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? Is bond being formed or broken? Formed. ठीक है, it's formed, right? So it's exo, right? और ये जो लास्ट रिएक्शन है ना, ग्रुप वन मेटल्स का पानी के साथ जो रिएक्शन होता है, दैट्स हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, इट्स वेरी वेरी एक्सप्लोसिव। तो वो वैसे ही पता होना चाहिए, ग्रुप वन मेटल्स दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद वाटर एंड दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। तो तो यही आंसर था उसका। ठीक है, दैट्स द वन दैट्स एंडोथर्मिक। अच्छा, नेक्स्ट वन। ये अब वो आई थिंक यू हैव टू फिगर आउट और कैलकुलेट द एंटायर एंथैल्पी चेंज। ठीक है। तो रिमेंबर, bonds broken is endo। ये मैं पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन CH4, राइट? दिस इज CH4। तो we're going to try and figure out how many bonds are broken and how many formed। O2 molecule क्या होता है? It's got a double bond and there are two O2 molecules। ठीक है। अच्छा, then it's forming carbon dioxide। carbon dioxide is, ये कल हमने इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी किया था। carbon dioxide is this thing। carbon makes 4 bonds while oxygen makes 2 bonds। ठीक है, and there are two water molecules। ठीक है, water is this thing। अच्छा, अब करना ये कि you're going to break all the bonds in the reactants, and then उसके बाद ना you're going to form all the bonds in your products। ठीक है।
तो उस साइड पे बॉन्ड सारे तोड़ देने हैं, तो कितने बॉन्ड्स टूट रहे हैं? काउंट करके तो बताओ ना, हाउ मेनी बॉन्ड्स डू यू नीड टू ब्रेक? क्या होगा? शादी क्या होगा? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन? I don't know. नहीं, ये सारे ऑल दीज बॉन्ड्स नीड टू बी ब्रोकन, राइट? जस्ट काउंट देम, ठीक है? You've got a CH bond being broken, another CH bond, another CH bond, and another CH bond being broken, right? Yeah, So all of them are going to be broken, ठीक है? yeah, So you're breaking four C and H bonds, right? yeah, और फिर आगे आगे you're going to break the O double bond O as well, ठीक है? तो O double bond कितने तोड़ रहे हो आप? You're breaking two of them, right? So you're breaking two. अच्छा, तो ब्रेकिंग बॉन्ड इज एंडोथर्मिक, ठीक है? रिमेंबर दैट। तो वो सारा उसकी वैल्यूज होंगी ना, दे गोइंग टू बी पॉजिटिव। एंड देन यू गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक है? फॉर्म बॉन्ड्स इन योर प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो उसमें कौन कौन से फॉर्म कर रहे हो? यू फॉर्मिंग दिस बॉन्ड, यू फॉर्मिंग दिस बॉन्ड, तो सी डबल बॉन्ड ओ जो है, यू फॉर्मिंग टू ऑफ देम, ठीक है? बट बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का जो साइन होता है दैट्स नेगेटिव, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर? यू हैव टू फॉर्म दी ओ एच बॉन्ड्स, ठीक है? एंड यू हैव टू फॉर्म फोर ओ एच बॉन्ड्स, ठीक है? सो दैट्स ऑल गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक, ठीक है? तो याद रखना फॉर्मूला क्या है कि इट्स बॉन्ड्स ब्रोकन, दैट्स ऑल एंडोथर्मिक, दैट्स ऑल पॉजिटिव, एंड वो रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है? यू आर गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिएक्टेंट बॉन्ड्स, एंड माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड ये आपकी प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है? Okay. तो इसका जरा कैलकुलेट करो ना, 4CH, ठीक है? दैट्स गिवन अवे, दैट्स 410, 4 टाइम्स 410, 2 O double bond O double bond O is over here, so that's 2 times 496. अच्छा, फिर minus 2 times serial bond O is given over here, that's 805, 2 times. और फिर 4OH, minus 4OH, OH किधर है? That's 460, minus 4 times 460. जरा इसका आंसर निकालो, क्या आ रहा है? It's D. डी? शायद आपको भी डी है, ऋषभ? I got minus 818. हाँ, ये अब देख लो, -818, I think it's going to be minus. Yeah, it's -818. Sorry, it's minus. ठीक है, so it's this one, not this one. ठीक है, अच्छा, we're going to do a few more questions like this, ठीक है? ये मैं वो वर्कशीट खोल लेता हूँ। किधर है क्या? एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, कहाँ पे एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स? 287, तो यहाँ पे। अच्छा, ये कैलकुलेट करें, so everyone try and do this on your own के बस क्वेश्चन नंबर 4 से कर लेते हैं। This reaction is given. The values for bond energy are given. ये नीचे वाले को इग्नोर करो, ठीक है? So all of the bond energies are given. इसका मुझे डेल्टा H निकालो, एंथैल्पी चेंज। What is it? What do you get? Bonds broken minus bonds formed, ठीक है? Bonds broken इस साइड पे और bonds formed इस साइड पे। इसकी जरा वैल्यू निकालो और कैलकुलेट करो सारे।
Sir, you do 3 times 390 plus 3 times 155, and then you do minus. Yes, I mean this is NH. What is NH? ठीक है, 3 times 390 Yeah, and 3 bonds of FF. That's 3 times 155. Yeah, ठीक है, that's all positive. ठीक है. And the bonds that are getting formed, they're going to be minus. ठीक है, they're going to be okay. exothermic. I got negative 900. That I don't know. That may be true. किसी और ने किया? Anusha, Safa, Barbad, what's the answer? I'm still doing it. One sec. But it's negative 998. 998. ये देख लो फिर से. अच्छा, इसमें ना make sure कि the biggest mistake is on your calculator. ठीक है? It's not. I mean, the math is simple. It's just that people just mess up the signs or they just make silly mistakes. ठीक है? तो ये करो. It's just make sure double check. So 390 times 3 plus 155 times 3, and then bonds are getting formed. NF, that's 280 times 3, वो minus में होगा. And then the other one, HF, that's 565 times 3 as well, right? या फिर वो दोनों की वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क आ रहा है. ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि डबल चेक दिस. Well, people get this part right. They just make mistakes when they try to enter all of that on a calculator. I still got negative 900. Yeah, it sounds it is correct. ठीक है. So ठीक है, that's negative 900. ठीक है. So let's do another similar question. Okay. So let's do this one. Yeah, this one. So now in this question, they gave you during the reaction, the amount of energy given out is 780, right? So they gave you the enthalpy change already. ठीक है, और given out है ना, तो that means it's negative. It's exothermic. ठीक है. So that means it's minus 780. So you already know what the answer is to this. What they are looking for is the FF bond. They've given you the FF bond energy as well. What they're looking for is the SF bond energy. ठीक है. तो उसी तरह करना है. Can you solve this? अब वो रिवर्स में है थोड़ा कि the answer is already known. The enthalpy change is already known. You don't know one of the bond energies. इसको सॉल्व करो. ये समझ आया ना किस तरह सॉल्व करना है? सफा, मरवा, अनुषे, शांजे. Yes, I think so. Yeah, I'll try solving it.
I got negative 1,100. 1,100. Yeah, 1,100. I forgot it's plus. Yeah, I think it's the value is big. Really, it's kind of big. Well, how many bonds are broken? That's FF bonds, right? There are two FF bonds, so that's 2 times 160, right? But the left side, but that's the only bonds that are being broken. 320. Yeah, and on the right side, how many bonds are being formed? That's 4 SF bonds, right? So that's 4 X. I'm going to just take SF as X, okay? And that's equal to minus 780. ये solve करना ना. Yeah. So what do you get? You get 320. You take that minus, bring that to this side, so that's plus 780. Take the 4x to the other side, then divide everything by 4. So क्या निकला? It's not going to be in the thousands. Okay. 275. 275. I think it looks to be 275. ठीक है लगे ये clear है ना? Is this clear? Yeah. Yeah. So ये फिर बाकी the rest are kind of the same. Makes sense. Let me just find another which is slightly. Yeah, try doing this one. It's got a slightly lengthier calculation. You have to find the delta H, okay? So bonds broken, break all the bonds, okay? And bonds formed, form all the bonds in the products. Find out what the answer is to this one. ये पहला वाला CH है. I think this is 412. ये जो पहला वाला नहीं है. CH, that's 412. I got 582. It's 582, right? Yeah, I got the same answer as well. Yeah, same है. 582. So ठीक है, that's fine. Nee, did you break all the bonds and formed all the bonds? I just did like plus plus and then minus. Like you multiply plus multiply and then the product I did the minus. हाँ ठीक है, but all of them, right? Like CC bonds, Yeah. ठीक है. Yes. अच्छा, just इसमें याद रखना, double bond and single bonds are like two different things, ठीक है? Like the double bond is a different thing, a single bond is a different thing, ठीक है? तो ठीक है, वापस पेपर पे आ जाते हैं. तो वही तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है इसकी. Just remember this, ठीक है? Just don't forget this now. Uh, and let me just explain one more thing कि since we are at it, ये जो energy profile diagram होता है ना, ठीक है? Let's have a look at do one energy profile diagram question as well. अच्छा तो सारे वही आई जा रहे हैं. ये हाँ. Always remember कि for example, if this reaction, it's an exothermic reaction, ठीक है? So based on what we just did, every reaction, the first step involves breaking of bonds.
ठीक है. It involves bond breaking. It's endothermic. Energy is gained. सबसे पहला काम है you're going to break the old bonds. ठीक है. And once the old bonds are broken, then you're going to form new bonds. ठीक है. So energy would be released. So bonds are going to be formed. And that's how you're going to form the products, which in this case is 4HNO3. ठीक है. अच्छा, अब so remember the energy profile diagram. Okay, the same thing that we just did using math. Every reaction involves bond breaking and it involves bond formation. Energy is gained while you're breaking bonds, and energy is released while you're. So this part is exothermic, it releases energy. That part is endothermic, it gains energy. ठीक है. So now the overall enthalpy change is the net energy, that is net energy ये होती है. ठीक है. That's this thing. दोनों के अंदर जो difference आ रहा है इनमें, products and the reactants. Like this reaction is exothermic. ठीक है. Why? Because overall it's exothermic because less energy is absorbed and more energy is being released. वो question भी पूछता है कि why is this reaction exothermic? तो उसकी explanation ये होगी कि less energy is being absorbed while you're breaking bonds and more energy is being released while you're forming bonds. ठीक है. तो डेल्टा एच जो होता है वो दोनों का नेट डिफरेंस होता है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. एंड देन देयर इज द थिंग कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी व्हिच इज द वो जो शुरू में एनर्जी चाहिए होती है. एवरी रिएक्शन नीड्स एनर्जी राइट एट द बिगिनिंग. व्हाई डज इट नीड एनर्जी राइट एट द बिगिनिंग? क्योंकि पहले पुराने बॉन्ड्स तोड़ने हैं ना, सो यू नीड एनर्जी फॉर दैट. ठीक है. सो दैट्स योर एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. क्लियर है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी क्लियर है? Yes. तो ये बस आखिरी कर लेते हैं 15 तक. ठीक है. Hydrochloric acid is added to excess calcium carbonate in two separate experiments. पहले तो मुझे equation बताओ जल्दी से, although उसने मांगी तो नहीं है. Calcium carbonate is this thing. Hydrochloric acid is HCl. So, what is the product? तो calcium plus 2 होता है, group 2 होता है, carbonate is -2. ठीक है. अच्छा, क्या what's going to be produced when a carbonate reacts with an acid? क्या प्रोड्यूस होता है कार्बोनेट प्लस एसिड? उसको भी देख लो डेटा शीट के. और मैं कार्बोनेट प्लस एसिड होमवर्क दे रहा हूँ. Carbonate plus acid produces, when you have a metal carbonate reacting with an acid, it produces salt, water and carbon dioxide. ठीक है. तो वापस इस पे आ जाओ. तो किधर गया पेपर? तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और सॉल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? इट्स गोइंग टू बी कैल्शियम क्लोराइड. ये +2 है, ये -1, सो इट्स गोइंग टू बी CaCl2. ठीक है. इज दिस क्लियर? एंड यू हैव टू बैलेंस इट. सो Cl यहाँ पे 2 है तो 2 HCl. ठीक है. तो अच्छा, okay, the question is there are two different concentrations of hydrochloric acid are used, but the experiment is the same in both experiments, but the temperature is the same. तो concentration आप ज्यादा करते हो तो reaction is faster, it's more steeper. ठीक है. वो volume of carbon dioxide produced जो है ना उसको calculate कर रहा है. So the first experiment, more carbon dioxide is getting produced at a much faster rate क्योंकि obviously the concentration is higher. तो which row is correct? तो वो कह रहा है कि collision rate. When your solution is more concentrated, तो दैट मीन्स कोलिजन ज्यादा होंगी. मतलब डाइल्यूट होता है तो पार्टिकल्स आर लाइक फार अपार्ट, बट इफ इट्स कॉन्सेंट्रेटेड द पार्टिकल्स आर लाइक रियली रियली क्लोज टुगेदर. सो व्हेन योर सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, you're going to have more collision. The higher, it's going to have a much higher rate of, it's going to have a much higher rate of collision. ठीक है. Is this clear? Yes. Yes. अब इधर एनर्जी ज्यादा होगी पार्ट collisions की या नहीं? There are obviously going to be more collisions, Yeah. but would they have more energy? Remember, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एनर्जी तो प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के, राइट? Yes. He's not changing the temperature. Temperature is the same.
तो दैट मीन्स कि कोलिजन एनर्जी जो है ना, दैट इज द सेम, you're just having more collisions. ठीक है, इज दैट क्लियर? जब तक टेम्परेचर ही बढ़ाओ, Yes. तो इसलिए ए आंसर है। ठीक है, सो ये याद रखना कि द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ओनली इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन से और बाकी जितने फैक्टर्स हैं उससे द ओनली थिंग दैट्स हैपनिंग इज, मतलब कितने फैक्टर्स होते हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में? you've got concentration, ठीक है, you've got temperature, अच्छा फिर you've got प्रेशर। ये गैसेस के लिए प्रेशर करोगे ना तो पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, like if this is a gas, you increase pressure, the particles would be like closer to each other. और क्या होता है? सरफेस एरिया, पाउडर्ड स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, दे हैव मोर सरफेस एरिया एंड कैटलिस्ट। ठीक है, जस्ट रिमेंबर एनर्जी ऑफ द कोलिजन्स जो है ना, दैट ओनली इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। बाकी सारों से ना फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, दैट इंक्रीजेस। पाउडर्ड होगा तो you'll have more frequent collision. प्रेशर ज्यादा होगा, particles will be close together, so they'll be colliding or bumping into each other with a lot more. ठीक है, concentration ज्यादा होगी तो particles are closer together, so there going to be more collisions. ठीक है, कैटलिस्ट डालने से नंबर ऑफ collisions चेंज नहीं होती, उससे होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है। तो चलो ठीक है, ये बस यहाँ पे खत्म करें, और ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क। 1 सेकेंड, ये पहले मैं इधर ही कर लूँ वरना फिर। ये कार्बोनेट वाली इक्वेशन, ठीक है, देखिए। So write the reaction of aluminium carbonate and sodium carbonate. ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है, and with all these अच्छा दोनों का सेम। Do it with hydrochloric acid, nitric acid, phosphoric acid, and sulfurous acid। ठीक है, 8 equations है। ठीक है, send that in। ठीक है, और इनकी ना also write the solubility as well, बल्कि सारी कर लेते हैं, Okay. मतलब whether it's aqueous or whether it's insoluble, to write states: solid, liquid, gas, ठीक है, aqueous, वो भी लिख लो। तो 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड में भेज दो। चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, Okay. Allah, ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.